let's start. So in last video, I have taken a example for a student table, right? So this is my student table, and because one sure question you will get in exam to create table, right? After learning few theoretical concepts, then we will come to the practical part. So most probably from next video onwards, I will guide you how to create table. So, but there are some theoretical concept which I thought let me guide you through pen and paper. So it will be easy for you to recollect the things. So this is a column ID, name, and say percentage. Okay, so I'm taking three column: ID, name, and percentage. So these are table attributes. If you remember, I told you these are also known as table attribute. Let's take few examples. So ID just like admission number, as we know that in your school you must have your admission number, and that is a unique number. There is no possibility that two students have the same admission number. So we can say ID as a primary key, right? And name, say my student got 95.5%. 10032, you can take any example, any name of your own friend. Okay, 1003 Komal, say 85.6, and 1004 say Harshita got 89.5. So this is sample table. We'll learn this table will be given in the exam. Generally the structure of table is given. So let us understand how we create the table, right? We need to understand what kind of data is there in the ID. So we have data type int, integer. See here all the numbers are without decimal, right? The value inside the ID is without decimal. So how we create this is MySQL prompt. Okay, when you begin with the MySQL screen, you will get this text over there. This is called MySQL prompt. So we write the command is create table student. Okay, my table name is create table name student. Now the first column ID. The best part of MySQL that it is not case sensitive. So if I have taken here I capital or small does not matter. ID. Okay, ID data type integer. int we will write for integer, and size if you want you can define that maximum 6 number of digits will be there. Now if you want that ID as a primary key, so in continuation you will write primary key. Okay, in continuation you will write ID primary keys. This everything will do practically also.
So but there are few things which is required to understand here. So I have created, मैंने क्या किया, प्राइमरी की बना दी आईडी को. अब कॉमा के बाद then we'll come to the name. नेम में देखिए what kind of values are there in name. All character value. Okay, all character type of value. So character value will write char or varchar. We will understand the difference between char and varchar. हम समझेंगे. So char and size, say 20. So 20 means char 20. So 20 means the number of character. You can enter maximum 20 number of character long name, right? Then we have percentage. The field name is percentage. Percentage with the data type. See, the percentage has decimal value. So you will write decimal. Okay. So generally marks carry the 3 digits maximum before the decimal and 2 digits generally after the decimal. So we take the marks or percentage in 2 decimal places. So maximum digits हो सकती है हमारे पास 5 and with 2 decimal places. So this is the syntax we have. This is semicolon. This is the syntax which will create table. तो हम इसे करेंगे MySQL में and then it will be more clear to you. तो now अभी हम समझते हैं what is char. ठीक है, देखिए char data type क्या होता है. So now we have done one command to क्रिएट टेबल. अब हम समझते हैं ये चीज़ यूज कैसे होती है, डेटा टाइप्स का क्या रोल है, राइट. इंटीजर आप समझ गए, वी यूज द वैल्यू फॉर नॉन डेसिमल वैल्यू. सो कैर, व्हेन आई राइट कैर, कैर स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर. कैरेक्टर, ओके. सो व्हाट इट कैन स्टोर any printable character, any printable character. प्रिंटेबल कैरेक्टर क्या होते हैं, जो आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो, दैट प्रिंटेबल कैरेक्टर. एग्जाम्पल, एनी अल्फ़ाबेट, A, Z, एनी सिंबल, ठीक है, डॉलर, हैश, कोई डॉट, कॉमा, एक्सेट्रा, anything you can store inside the char. So when I write say char 10, हम छोटा सा लेते हैं. When I write char 10, so what happened, actually it reserve 10 memory blocks. देखिए समझना, एक एग्जाम्पल पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ओके, तो क्या हुआ, द मोमेंट आई डिक्लेयर कैर डेटा टाइप, इट ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ 10 मेमोरी ब्लॉक्स. ओके, ये मतलब है, आई मीन आप 10 से कम कैरेक्टर का नाम तो स्टोर कर सकते हैं, बट 10 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 से ज़्यादा करने में उसका मेमोरी साइज ओवरफ्लो हो जाएगा. ओके, सिमिलर डेटा टाइप वी हैव varchar. We have varchar. Varchar stands for variable
कैरेक्टर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वाइवा में, इन प्रैक्टिकल वाइवा ऑल्सो। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर। तो देखिए क्या फ़र्क है। मैं एक नाम स्टोर करता हूँ कैर में भी और वेर कैर में भी। सो कैर में एक नाम आया, से राजीव, आपका नाम है राजीव, ठीक है। RAJEEV, हाउ मेनी कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर। अब देखिए हुआ क्या, आफ्टर दैट दिस 4 मेमोरी ब्लॉक्स आर लेफ्ट। तो क्या हुआ कि 6 मेमोरी ब्लॉक में तो नाम आ गया, बट 4 मेमोरी ब्लॉक बचे रह गए, वेस्ट हो गए। सो कैर में ये प्रॉब्लम है, स्टैटिक डेटा टाइप है, ये मेमोरी ब्लॉक अनयूज्ड रह जाते हैं। वेर एवर इफ इट इज़ वेर कैर, और अगर ये वेर कैर होता तो आप कि जो बचे हुए 4 मेमोरी ब्लॉक थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो राजीव के बाद ये जो मेमोरी ब्लॉक थे, इट विल बी फ्रीड, रिलीज। ये मेमोरी ब्लॉक रिलीज हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। सो इट सेव्स द मेमोरी, वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप saves the memory. Char is a static data type, wherever variable character is a dynamic data type. जितनी ज़रूरत है उतना स्पेस लेगा, बचे हुए स्पेस को रिलीज कर देगा। दिस इज द इजी वे, इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, ठीक है। सो वी कैन से कैरेक्टर और कैर इज अ फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप। फर्स्ट पॉइंट क्या कह सकते हैं, कैर इज अ फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप। whereas varchar is a variable length data type. Right, where varchar is a variable length. वेरिएबल लेंथ मैंने आपको बताया, जितनी ज़रूरत है उतना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप, सिंपल, दिस इज व्हाट द डेफिनेशन। ओके, पहला डेटा टाइप आया कैर एंड वेर कैर, ओके। दूसरा हमने वेर कैर पढ़ा। थर्ड हम जो आपको समझना है, व्हाट इज द डेसिमल डेटा टाइप। सो डेसिमल डेटा टाइप ऑब्वियसली नाम इंडिकेट करता है कि इट विल स्टोर डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। अब इसमें देखिए होता कैसे है, व्हेन वी राइट डेसिमल हम लिख देंगे इट स्टोर्स, फ्रैक्शनल वैल्यू भी कह देते हैं डेसिमल वैल्यू को, फ्रैक्शनल और डेसिमल वैल्यूज मैथमेटिक्स के टर्म में हम डेसिमल को फ्रैक्शनल वैल्यू पे कह देते हैं। व्हेन आई राइट डेसिमल, देखो बेटा जब हम लिखते हैं 5,2, समझना इसको, 5,2 का मतलब क्या है कि 5 है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके। एंड 2 क्या है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस या डेसिमल्स, डेसिमल सही नहीं रहेगा,
हमको लिखना चाहिए डेसिमल प्लेसेस। यानी कि एग्जाम्पल अगर आप देखिए, मैं लिखता हूँ 567.29, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। देखिए टोटल डिजिट कितनी है 5 और डेसिमल प्लेस कितने हैं 2। सो दिस इज़ व्हाट द साइज इज़। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर हमेशा इतना देना ही देना है। अगर आपकी वैल्यू छोटी है, सपोज 67 है, तो वो ज़ीरो लगा देता है। इफ़ यू हैव 67.2 है तो वो यहाँ पे ज़ीरो लगा देगा। सो इट मीन्स आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस ज़रूर रहेगी, और बिफोर तो हम ज़ीरो लगाए ना लगाएं, द वैल्यू विल बी सेम प्रेडिक्टेड। So these are the main data type which used in creating एक और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ the fourth part int, okay, int stores the integer type, integer value. One very important thing I forgot to mention in char data type, that it can store the size up to 255 characters. 255 कैरेक्टर वैल्यू को ये स्टोर कर सकता है। ओके, दिस इज द डेटा टाइप। आई एम एक्सप्लेनिंग इन वेरी 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 इजी लैंग्वेज। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। एक और डेटा टाइप हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टू क्रिएट टेबल, और वो है डेट। अनदर डेटा टाइप इज डेट। ठीक है, नाम बता रहे हैं ना, जहाँ पर भी आपके पास डेट फॉर्मेट का डेटा होगा, इट स्टोर्स डेट फॉर्मेट ऑफ डेटा। तो जहाँ पर भी डेट फॉर्मेट ऑफ डेटा है, एग्जाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कोई ज्वाइनिंग डेट हो सकती है, एनिवर्सरी डेट, any date wherever it comes. And remember, MySQL by default take the data format in YY, MM and DD फॉर्मेट। US फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में वो डेटा का डेट एक्सेप्ट करता है। सो दीज आर बेसिक कंसेप्ट, बेसिक डेटा टाइप्स जो कि यूज़ होते हैं इन डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। ठीक है, नेक्स्ट कमांड जो हमारी थी, हम अपने टेबल को पीछे छोड़े आए, तो टेबल हमारी है, वापस से हम उस टेबल पर आते हैं। ओके, एंड विल सी हाउ टू इंसर्ट द रो। चलिए, सो यू हैव सीन दैट हाउ टू क्रिएट टेबल। टेबल आपका क्रिएट हो गया, ये कमांड आपने देखी, क्रिएट टेबल कमांड इज देयर। नाउ विल सी हाउ वी विल इंसर्ट द डेटा इनटू द टेबल। तो कैसे इंसर्ट होना है, देखिए, अगेन MySQL प्रॉम्प्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपकी MySQL स्क्रीन में अवेलेबल है। यू विल राइट इंसर्ट। अब मैंने आपको बताया MySQL इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सबसे अच्छी बात है, आप अपर केस में टाइप करो, आप लोअर केस में टाइप करो, डज नॉट मैटर। सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड पार्ट। नहीं तो हमको अपर केस लोअर केस का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो द कमांड इज, कमांड क्या होगा, देखें, इंसर्ट इनटू। ठीक है, इस टेबल में हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं। रिकॉर्ड इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज करना है हमें।
ठीक है। वैल्यूज़ के बाद देखिए, अब ध्यान रखना कि सीक्वेंस ऑफ डेटा सेम रहना चाहिए। तो पहला क्या है, 1001। आप यहाँ पे सिंगल कोट भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे डबल कोट भी लगा सकते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी। एंड दिस single quote, double quote are optional for integer values. For numeric values, integer and decimal, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आप लगाएं। कॉमा, नेक्स्ट क्या है, रामलाल। ओके, नेक्स्ट वैल्यू इज रामलाल एंड 95.5। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिंगल कोट डबल कोट नहीं लगाया। So if you press enter after this, the row will be inserted into the table. So very easy way to understand the command. कुछ चीज़ें थी जो मुझे आज आपको theoretically समझानी थी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे ही आप करके आपको you have to insert all the rows in the table, सारी की सारी rows। सेकेंड कमांड सिंपल हो जाएगी, मैं लिख देता हूँ फटाफट। insert into student values। ओके, वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1002। अब मैं नहीं लगा रहा हूँ सिंगल कोट बिकॉज आईडी इज एन इंटीजर डेटा टाइप। हर्ष, परसेंटेज है हर्ष की 92.8, बस। सो दिस इज हाउ all the rows you have to insert, and all the 2 rows will be inserted into the table, और सारी की सारी रो आपको इसी तरह से इंसर्ट करनी होंगी। सो आई होप चिल्ड्रन आज जो हमने किया वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल join the class with MySQL interface, and I will suggest you that you also install MySQL on your computer, and along with me do practice of these commands. These are very easy portions, so me and you will be in same phase of syllabus. Thank you very much. Keep learning, keep growing. Thank you.